Hello everyone. So in the previous class, we have done till machine learning algorithms for classification, sentiment analysis, and now I need to talk about deep learning algorithms, which are used to perform the same task, that is sentiment analysis. Here I will be using deep learning, that means the basic. Then I do apply RNN, recurrent neural network. I will also include LSTM. I will also include BiLSTM. Okay, so these algorithms are be including here. Fine. Okay. So first, what I am doing here is I want to label encode my sentiment category. Okay, I need to perform label encoding, and why I'm doing label encoding here, because we do have multi classification problem, and this multi classification problem, we already have the labels as minus 1 0 and 1, but this minus 1 0 1 is not being expected here in our algorithms if we put. Okay, so what I will be doing, because there are some issues related to such values. Okay, so what I'm doing is I am performing label encoding. I do already have the sentiment category values as minus 1, 0, and 1, but I will label encode it to 0, 1, and 2. Let me share my entire screen now and tell you what I am looking for here. See, I tell you what happened. Uh, Sentiment category is your target, and it is having values minus 1, 0, and plus 1. Okay, though I think I should have to check the data type of it, but I'm pretty much sure that the data type will be in int 64 only, integer type only. Okay, still if you want me to check, let's see df info. Let me check df info. Okay, df dot info. It's int 64. Okay, still when I put this value sentiment category in my algorithm, it gave some error to me. Therefore, what I did is I perform label encoding. That means just to convert minus 1 to 0, 0 to 1, and 1 to 2. These are the labels. So these are my classes and these are my labels, 0, 1, and 2. Okay, fine. Then next, I imported some libraries, deep learning libraries, tokenizer, patch sequences, sequential model, dense layer, embedding layer, LSTM, spatial dropout. Okay, there are certain layers which I need to use, and the idea, the concept is very much clear, because you have to make an architecture. So deep learning is not straightforward. You have to build an architecture.
So for building the architecture, you are having a sequential model. That means we are considering it as feed forward, and here we have to take different layers which have specific purpose. We do have input layer, we do have output layer, we do have hidden layer. All these layers we have to take. Along with that, we have some special layers, those I mentioned, like embedded layer. Okay, dropout, spatial dropout. Okay, dropout, you very well know that, for preventing the overfitting. So we don't train partial neurons in that. So I'm taking dropout, I'm taking embedding layers, such kind of layers I'm taking. I took LSTM also. LSTM is also as a layer. Okay, LSTM, it's not like it's a layer, LSTM, long short term memory. Okay. However, my first concern is to make a basic model I will make for deep learning. Okay, before that, let me take X as text, Y as sentiment. Okay. So I will be taking on X axis text, Y axis sentiment, then I will perform train test split. Okay, that's what I'm doing. Okay, and then I'm performing tokenization. Very important. As you are moving towards deep learning tokenization, you are having text which is made up of words, but these words you need to tokenize. Okay, so if you are having any sentence, you have to tokenize it in form of word piece tokens or simple tokens. So right now just I'm talking about tokenized, not word piece, just tokens. The cat sat on the mat. So the tokens will be the, comma, cat, comma, sat, comma, on, comma, the mat. One, two, three, four, five, six. Six tokens will be there. Okay, tokens are the elementary parts. Then you are writing fit on text. Okay, here you are writing fit on text. Fit on text means you are creating vocabulary of tokens. Okay, you are creating vocab of tokens. Vocabulary means you are annotating each and every token with an integer value. So there will be a table created. Fit on text means there will be a table created. ID and token. One, the, two, cat, three, sat, four, on, five, okay, the. So it may happen that the ID will be remain same. Okay, ID will remain same. So it will not take the, it will take mat. Okay, that will be five. For the, I am having the same ID. Okay, and these techniques now do care of the vocabulary also. Vocab size should not have to be more unnecessary. So this is called as fit on text. Afterwards, what you are doing is you are converting text into sequences. Okay, you are converting text into sequence. Sequence means what? Okay, if you do have the sentences, okay, obviously you are having sentences in the text. I am happy. You are good. We are
learning, and and it's going to give us success. So, if I do tokenize and make the vocab, it is having three words. It is having three words. It is having one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 10 words. Okay, so at the moment we are creating sequence. So I comma am comma happy. This is your sequence for the first sentence. You comma are comma good. ओके, लेकिन मशीन ऐसा काम नहीं करेगा. मशीन ये नहीं करेगा. मशीन मशीन विल राइट द आईडी नंबर फॉर दम. मशीन ऐसा लिखेगा 1 2 3 4 5 6 वट एवर बी द आईडी जो वकैब में होगी ना. वट एवर बी द आईडी प्रेजेंट इन द वकैब ना, वो ये लिखे. वो ये थोड़ी ना लिखेगा भाई ये बात खत्म, डन, ओवर. आप जब इनपुट देते हो ना उसके बाद खेल खत्म. मशीन डजेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ये आई एम हैप्पी वैप्पी वो नहीं पता उसको. टोकन हुए, आईडीज असाइंड हुई, वोकैबुलरी बन गई. Okay, so it's going to work according to the numerics. It's not going to work upon what the text is. Later on it will understand. Okay, ये काम नहीं करेगा वो. अब ये होंगे ये. अब उसमें you are having one of the sentence which is having 10, like 7, 8, 9, 10, 11, up to 10. There are 10 tokens. 10 है. So this is the big sequence. These two are the small sequence. तो सीक्वेंसेस में उसने क्रिएट तो कर दिया. उसके बाद व्हाट विल हैपन, इट विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द मैक्स सीक्वेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस. तो इट विल चेक द एंटायर ट्रेनिंग डेटा एंड विल आइडेंटिफाई विच सीक्वेंस इज अ मैक्सिमम. उसकी लेंथ क्या है मुझे ये बताओ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम सीक्वेंस. तो भाई उसको पता चल गया, इट आइडेंटिफाइड दैट दिस द थर्ड सेंटेंस इज हैविंग अ सीक्वेंस लेंथ ऑफ 10. These two are having sequence length of 3 and 3. So it is mandatory to convert minimum sequences to maximum length. करना पड़ेगा आपको. So these 3 they should have to be converted 10 10. उनको max के बराबर करना पड़ेगा. That's what you have to do. Okay, then only ना my matrix, क्योंकि once it will convert it, then it will organize them into a matrix format. टेंसर बनाएगा ये. ठीक है, हायर ऑर्डर. अभी तो वेक्टर की तरह यू आर लुकिंग लाइक इट एज अ वेक्टर. बाद में उनको मैट्रिक्स में लिखिएगा. एंड इफ वी डू हैव फर्दर मोर डायमेंशन, लाइक जितने आपकी लेयर्स हैं या न्यूरॉन्स हैं या वट एवर, इफ इट्स गोइंग टू ऐड मोर डायमेंशन तो उसको टेंसर में कन्वर्ट कर देगा वो. So right now what happened is we are having two sentences of 3 3 and one sentence is of 10. So those 3 3 will be converted into 10. For that we require padding. Okay, that is called as pad sequences. करना पड़ेगा. Why? क्योंकि उसको इस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना है. Okay, so those who are having 3, I need to add 7 more. ठीक है, 7 मोर मुझे ऐड करना है. सो व्हाट 7? आई विल ऐड 7 zeros to them. Okay, either pre or post. That means either I will add 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, then 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6. और ये वाला तो ऑलरेडी 7 8 9 10 11 12 13 14 15. दिस वन वाज ऑलरेडी फिल्ड. इसमें ऑलरेडी 10 का फिलिंग था. Okay, those who are not been filled, we filled it with zeros. You can perform pre-padding or either you can perform post-padding. Not an issue. I think this is a preferred way, like pre-padding. Okay, I am doing pre-padding. So I put 7 zeros in front. Now
this is also of 10, this is also of 10, this is also of 10. It's called as pad sequencing, padding. ओके, ये करना पड़ता है। देन उसके बाद ये पैडिंग हो गया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग बोथ का पैडिंग हो गया। देन आई यूज्ड सिक्वेंशियल मॉडल, डेंस एम्बेडिंग, फ्लैटन। ओके, अब ये क्या है? आई मेड सिक्वेंशियल मॉडल। Okay, sequential model is this model you very well know. Like feed forward model is a sequential model. This is sequential. Okay, sequential model. Why? Because we give input here and we are having neurons here. Okay, and this model is responsible for Nobel Prize also. Okay, this architecture, because our entire deep learning generative AI is based upon neural network only. So the person who gave this idea, the concept, though such idea was given in 1948 only. I think Mac Pitts, उन्होंने बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो था, बायोलॉजिकल न्यूरॉन, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि दैट वी कैन इन मशीन्स वी कैन हैव दिस मॉडल आल्सो। 1948 ही गेव एन आइडिया दैट ऐसा हो सकता है। एंड देन मिस्टर जॉफरी, जिनको शायद मिला है ये भी नोबेल प्राइज, उन्होंने ये डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर दिया। एंड नाउ एवरीथिंग इज बिल्ड अपॉन दिस डीप लर्निंग आर्किटेक्चर। ही गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। थोड़ी आश्चर्य वाली बात है कि एआई, ही गेव द आर्किटेक्चर ऑफ एआई, नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अभी। सो हाँ, दिस इज सिक्वेंशियल मॉडल एंड फीड फॉरवर्ड है। ठीक है, फीड फॉरवर्ड, एंड हियर आई एम गोइंग टू गेट द आउटपुट। ओके, तो हियर आई एम टेकिंग model sequential, I'm adding a embedding layer, flatten layer, dense layer with 10 neurons, dense layer with 3 neuron. So लास्ट का 2 लेयर तो समझ में आता है सर, ये डेंस लेयर विथ 10 न्यूरॉन, डेंस लेयर विथ 3 न्यूरॉन। अच्छा, ये इट्स नॉट लाइक दैट कि प्री डिफाइंड है कि सर यू हैव टू टेक 10 ओनली, तो 10 ही मेरे को लेना है ना। इट्स नॉट लाइक दैट। You it's up to you. Okay, it's up to you. Fine. So at this my example, I took 10 neurons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And at the last I took 3 neurons because of multi classification है ना, 0, 1 and 2 multi classification है। तो ये shortmax function I am using, shortmax activation function। shortmax activation function probability देता है। Okay, it will give the probability of these 3. Okay, 0 का आने का चांस कितना? For 1 how much it is, for 0 how much it is, 1 how much it is, 2 how much it is, वो probability था, short max। अच्छा, तो ये है dense layer with 10 न्यूरॉन, ये है dense layer with 3 न्यूरॉन। इसके आगे you are having flatten। flatten क्या करता है? 1D में कन्वर्ट करता है। The previous data which is in a high order, it will convert it into lower dimension, 1D। ओके, 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा उसे। और वो 1 डायमेंशनल डेटा अगेन ये जो है, ये भी सारे न्यूरॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, एवरी टू एवरी ये सब जाएगा न्यूरॉन्स में फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। इसके पहले एम्बेडेड लेयर है, एम्बेडिंग, एम्बेडेड लेयर। अब एम्बेडेड लेयर व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट वी सेड हियर, embedded layer input dimension is equal to length of tokenizer plus word index plus 1। तो भाई जो इनपुट दिया जाएगा, द इनपुट विच विल बी गिवन टू द एम्बेडिंग लेयर,
that is equal to the length of टोकनाइजर प्लस वर्ड इंडेक्स डॉट वर्ड इंडेक्स टोकनाइजर कितने टोकन बन रहे हैं हाउ मेनी टोकन्स आर मेड टोकनाइजर डॉट वर्ड इफ यू वांट टू प्रिंट दिस थिंग सर प्रिंट ही कर दो ना क्या ये प्रिंट हो जाएगा कैन वी प्रिंट व्हाट इज द टोकनाइजर प्रिंट दिस थिंग बता दो क्या है ये इसकी वैल्यू निकल सकती है 1834 so these much are the number of tokens in your data 1834 अच्छा वो जीरो से स्टार्ट होता है शायद ऐसा कुछ होगा तो वन कर दिया उसने +1 सो लेंथ ऑफ टोकनाइजर तो दिस विल बी द इनपुट दैट मीन्स यू आर गिविंग द एंटायर टेक्स्ट एज एन इनपुट यू आर गिविंग द एंटायर टेक्स्ट जिसका आपने अभी ऊपर ये पैडिंग वेडिंग कर दी ना ये यू क्रिएटेड द पैड सीक्वेंसेस पैडिंग करिए आपने ओके सो यू विल बी हैविंग लाइक दिस फॉर एग्जांपल बता रहा हूं लेट अस सपोज यू आर हैविंग 5 in first 5 in second 5 in third okay this is a sequence number 0 sequence number 1 sequence number 2 सभी सीक्वेंस का लेंथ तो सेम ही होगा भाई तो इन टोटल जो है ना वो 1834 कर रहा 1835 कर दो यार नहीं तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे सर वो 55 बोल रहे हो और 1835 so in total 1835 all we are giving as an input to embedding layer ऐसा कर रहे हैं अपन एम्बेडिंग में दे रहे हैं आउटपुट 128 का लेंगे आउटपुट 128 का ले रहे हैं ओके द आउटपुट फ्रॉम द एम्बेडिंग इज 128 तो इनपुट में 1835 है आउटपुट में 128 है एक चीज और है वन मोर थिंग इनपुट मैक्सिमम लेंथ मैक्स लेंथ तो भैया देखना टोटल 1835 है टोटल नंबर ऑफ टोकन्स आर 1835 लेकिन एक साथ करके खाना नहीं खिलाते हैं ओवरऑल इनपुट इज 1835 okay but we will not feed 1835 in the mouth of the embedding layer no the max length is 5 so let the first sequence be complete so first 5 will be given to the embedding okay and once it is over then next 5 will be given so this is how we are going to feed it okay this is how we are going to feed to the embedding layer 5 then 5 then 5 so max sequence length is 5 so 5 5 5 5 5 up to 1835 so the entire 1835 is divided into its sequences that's what the max sequences is the maximum length which you are going to give it to the embedding is this much and the overall output is 128 सर ये क्या लफड़ा है सर 1835 का 1835 टोकन थे 1835 128 आउटपुट ये क्या कम वम कर दिए क्या हैव यू रिड्यूस्ड 1835 को 55 का डोज बना के यू हैव गिवन एज एन इनपुट एंड आउटपुट यू आर टेकिंग 128 सर रिड्यूस कर दिए क्या हाँ करें भैया एम्बेडिंग गदर है गदर एम्बेडिंग इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ठीक है दैट इज इन कंटिन्यूस इन नेचर कंटिन्यूस वेक्टर्स सो एम्बेडिंग में हमने दिए तो पूरे ही थे उसने what it did is it created vector representation for each token लेकिन उसने फिर एक कलाकारी करी यहां those words those tokens who are similar उनको सेम
वेक्टर या एम्बेडिंग पकड़ा दी. Those who are same, those whose meaning are same, they have been provided the same embedding. उसने बोला यार इतना लंबा चौड़ा काम, how much, why we are going to consider this much? Every word, if you do consider 1835, the model will become complex na. Model will become complex. So what it did is, those words which are having similarity, it provided same embedding to that, and it only considered the important relevance whatever be given as an input to it, and finally it gave only the output as 128. That is defined by my side only. I can take 256, I can take 512 also. Okay, so it performed the vectorization here. Okay, just I was explaining in my previous class also, if I do have the words like king and the queen, so king and queen both belong to royal family. So it is possible that I can give a vector. This is king a vector, this is queen a vector. Since both are belonging to the royal family, I can assign a same vector to them as per their context, as per their meaning. Embedding is a, it's a big deal. Embedding. We do have, अच्छा ये तो embedding layer है. मेरे पास embeddings, word embeddings होता है, word embeddings हम करते हैं perform. Word to vec. This is a pre-trained model. Pre-trained model to perform embedding. Okay, we are having other also, glove embedding. So we do convert the vectors which are the continuous value. For example, king है, king का embedding होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा होगा. ओके, LLMs भी ऐसी गेम खेलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यही करते हैं, वो एम्बेडिंग, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. एंड देन ये 128 का जो आया, उसको पहले फ्लैट मारा मैंने. ओके, इसकी फ्लैटनिंग करी. दैट मीन्स ऑल दीज एम्बेडिंग्स आई केप्ट. ओके, यहाँ एक वर्ड का वेक्टर इज ओवर, देन आई टुक अनादर वेक्टर, देन आई टुक अनादर वेक्टर, देन आई टुक अनादर वेक्टर, अनादर वेक्टर, ये फ्लैटन हो गया, 1D में कन्वर्ट हो गया वो. प्रीवियसली इट वॉज इन लाइक दिस डायमेंशन, दिस इज योर V1 एंटायर, दिस इज योर V2 एंटायर, ऐसा करके होगा वो. बाद में उसको फ्लैट मार दिया, 1D कर दिया. एंड देन आई गिव दिस एज एन इनपुट टू डेंस लेयर वेयर आई एम हैविंग 10 न्यूरॉन्स, देन 3. भाई इतना अंदर की बात समझ में आनी चाहिए. Okay, it took effort, and it can only be understood if you are investing a lot of time with these topics. Then only you are capable enough to go live and talk about the topics, else you can't. बहुत रिगरस स्टडी चाहिए इन सब चीज़ों की. ठीक है, आई मेड अ सिंपल आर्किटेक्चर, आई ट्रेन दिस आर्किटेक्चर. ओके, सो हाँ, माई लॉस फंक्शन इज स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, वो मल्टी क्लासिफिकेशन है ना यार. ओके, क्योंकि यहाँ you took ना sort max, so here will be sparse categorical. And if you are having binary classification, so here you are going to take sigmoid, and here it will be binary cross entropy. इसको डिलीट करता मैं and binary cross entropy लिखता. Okay, ठीक. तो here I perform the training, and up to 10 iterations I did train my model. My model ठीक है, वो train हो गया, and then I evaluated my model. I printed the loss and the accuracy. Accuracy for the test data I'm getting 0.79, 80% के आसपास आ रहा है. अच्छा, मशीन लर्निंग मॉडल्स में तो 80% भी नहीं पहुंचा था मैं. इन मशीन लर्निंग मॉडल्स आई गेस वो 60, 65, 68 तक ही था. ओके, विद वन ऑफ द मॉडल, विद डीप लर्निंग आई रीच टू 80%. ओके, यहाँ तक मैं पहुँच गया. एंड देन आई मेड द प्लॉट. ओके, इसके लिए प्लॉट बनाया, एक्यूरेसी और लॉस का प्लॉट बनाया मैंने.
ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, ट्रेनिंग लॉस एंड द वैलिडेशन लॉस. आई मेड अ प्लॉट फॉर इट. आप देखो, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है. ओके, accuracy is increasing, that means my training accuracy is increasing. And this is orange is testing accuracy, validation accuracy. Okay, orange is validation accuracy, blue one is training accuracy. So this is what we do expect, the training accuracy should increase with time, the accuracy should increase with time. Okay, कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, वी डू ट्रेन अवर मॉडल. ठीक है, वंस मॉडल गॉट ट्रेन्ड, ऑल राइट, यू आर परफॉर्मिंग प्लॉटिंग. प्लॉटिंग में आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन का आप प्लॉट बनाते हो. Our expectation is, if I do make a plot for accuracy, if you make a plot for accuracy, so training accuracy should increase, training accuracy should increase, validation accuracy should also increase, but it is desired that validation accuracy should have to be more than training. ये desire है, ये ideal situation है. The validation should have to be more than training. ये ideal situation है. Because what is validation? Validation is done during training only. We do validate our model. करते हैं अपन. Training के दौरान ही we validate our model. And just to check whether the training is proper or not. और proper हो रही है, नहीं हो रही है. Okay, so with the training, the accuracy, if the accuracy is increasing, validation is assumed to be an unseen data during training. So during training only, if the model is giving high accuracy on the validation data, that means everything is going well. अच्छा, कम भी आ रही तो, for example, validation is less, but it should not be more less. If you reach like this in this particular situation, if you reach in this particular situation, training accuracy is 90, validation is 70, this is overfitting. Such models are overfitted. हाँ, training 90, validation 85. ओके, 5% का गैप चला लेंगे अपन. बट देयर शुड नॉट बी ह्यूज गैप बिटवीन ट्रेनिंग एंड द वैलिडेशन, क्योंकि वैलिडेशन पे 70 फेंका उसने, तो टेस्टिंग पर भी इतनी कुछ आएगी, 70 60 कुछ ऐसी आएगी. योर मॉडल इज ओवरफिटेड नाउ. हाँ, बट ट्रेनिंग 90, वैलिडेशन 95, आई विल बी हैप्पी. मतलब अनसीन डेटा पर भी भाई माय मॉडल कमाल कमाल, इट्स गोइंग वेरी वेल ऑन अनसीन डेटा ऑल्सो. ये टिप्स है, पता नहीं ऐसे आप तो प्रैक्टिकल करोगे सब समझ में आएगा. ओके, और लॉस का, लॉस शुड बी लाइक दिस. ट्रेनिंग लॉस शुड हैव टू बी डिक्रीज, वैलिडेशन लॉस शुड ऑल्सो बी डिक्रीज. लेकिन वैलिडेशन लॉस ट्रेनिंग से और कम होना चाहिए. सो आइडियल सिचुएशन क्या है? वैलिडेशन एक्यूरेसी शुड बी मोर देन ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस शुड बी लेस देन ट्रेनिंग लॉस. आइडियल सिचुएशन है. It's not mandatory that you will get this ideal situation, but somehow what near ना, if you get then fine. अच्छा, हमारा एक्सपेक्टेशन भी ये होना चाहिए कि ये स्मूथ हो. स्मूथ. You may get fluctuations. ट्रेनिंग एक्यूरेसी बड़ा घटा like this. You may have such kind of scenario. लेकिन क्या होता है कि ये अप एंड डाउन, वाई? बिकॉज यहां पर जो डेटा है, इन दिस पर्टिकुलर डेटा, इन दिस पर्टिकुलर सैंपल में मॉडल इज स्ट्रगलिंग टू आइडेंटिफाई द पैटर्न. जहां भी डिप हुआ, मॉडल स्ट्रगल कर रहा. ओके, वहां जो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, ओके, यू विल नो ना, वो डीप लर्निंग में ग्रेडियंट कैलकुलेशन होता है ना, W डैश इज इक्वल टू W माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल W. Alpha is the learning rate, del L by del W, this is the loss calculation, this is the initial weight. तो ऐसा कुछ बात है. आपको सारे फंडे क्लियर कर दिए मैंने. ओके, फाइन. तो भाई ऐसा है, I made the plot and you can see that some struggling is there, some fine is there. Okay.
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी बना दिया इसका। माई मॉडल इज अनेबल टू आइडेंटिफाई लेबल वन, ज़ीरो दे दिया उसने, फेल हो गया, ये लेबल वन पकड़ नहीं पाया। सी द कन्फ्यूजन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, लेबल वन, ज़ीरो 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 ज़ीरो। मतलब we do have machine learning models also, some machine learning models also, they also failed to interpret class 1, class 0 and class 2 they are able to interpret, but class 1 is they are unable to interpret। तो भाई ऐसा मॉडल यदि क्लास 1 ही नहीं पकड़ेगा तो मल्टी क्लासिफिकेशन हाउ आई कैन डू, मॉडल तो फेल हो गया। कई कारण है इसके, एक तो डेटा कम है, डेटा इज वेरी लेस, हो सकता है अनबैलेंस्ड हो, समहाउ अनबैलेंस्ड डेटा आई एम गिविंग, तो पैटर्न ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया वो। एंड यस आई गिव अनबैलेंस्ड ओनली, I haven't done the balancing. I gave unbalanced, but you have to balance it and then you have to give to the model. ठीक है, देन आई मेड, इसको बाद में बताऊंगा। देन आई मेड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN। भाई क्या हुआ कि, अच्छा फंडा सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ओके, लेट मी चेक हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग, बस सुनते जाना आप, मेरे साथ रहना, सोना मत। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर हैविंग टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट तो सीक्वेंस में ही रिटर्न होता है ना, देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डर ना ऑफ टेक्स्ट, तभी तो वो मीनिंगफुल बनेगा, मीनिंगफुल, देन ओनली इट विल मीनिंगफुल, है ना। तो यू डू परफॉर्म एंटायर NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप ऑर्डर टेक्स्ट यू डू टेक, okay, and it should have some context, it should have a meaning। if I say I am your AI teacher, so यदि मैं ऐसा बोलूं आई टीचर AIUM, तो ये तो गलत है ना, दैट इज रॉन्ग ना। तो टेक्स्ट तो सीक्वेंस में ही होता है प्रॉपर। अब मशीन लर्निंग मॉडल्स व्हाट दे डू, मशीन लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल में, हाँ, मशीन लर्निंग मॉडल में वी यस्टरडे ओनली क्या करा था हमने, पूरा डेटा क्लीनिंग करा, डेटा क्लीनिंग, एंड वी टुक, वी परफॉर्म TF-IDF वेक्टराइजर, ये कर दिया हमने, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट हैपेंस इन TF-IDF, TF-IDF भाई, TF-IDF ये भी वेक्टर, वेक्टर में कन्वर्ट करने का इट्स अ तरीका, इट्स अ वे टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर्स। In deep learning also we are converting, but first we are considering them in a form of sequence, then we are performing the vectorization of it with the help of embedding। But in case of machine learning we are not converting, we are not dealing it in a form of a sequence, no। मशीन लर्निंग भाई इसको सीक्वेंस मानते ही नहीं है। TF-IDF क्या करता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और अदर यू कैन टेक CV, काउंट वेक्टराइजर। TF-IDF क्या करेगा, इट विल आइडेंटिफाई यूनिक वर्ड्स इन योर टेक्स्ट, इट पूरा एंटायर, पूरा इन द एंटायर टेक्स्ट इट विल आइडेंटिफाई द यूनिक वर्ड्स। और फिर क्या करेगा भाई, ये उनके कॉलम बनाएगा, जैसे कि आई एम योर AI टीचर, ऐसा करेगा। So for example, you are having 1835 words, so it will make 1835 column, ये करेगा। And if you are applying count vectorizer, तो वो क्या करेगा, जैसे your first sentence is I am here, this is a first sentence, तो I is there, M is there, यहां पर कहीं here होगा, उसको 1 करेगा, बाकी सबको 0 कर देगा, rest all are 0। फिर इट विल पिक अप अनदर सेंटेंस, लेट अस सपोज अनदर सेंटेंस इज आई एम योर AI टीचर, तो I1 M1 योर 1 AI1 टीचर, ये 1,
इनको जीरो करेगा, आई एम योर एआई टीचर, बाकी सबको जीरो करेगा। दिस इज व्हाट काउंट वेक्टराइजर डू। तो ये जो बना ना, ये वेक्टर है। ओके, इसका वेक्टर बनेगा 1 1 1 1 0 0 0 0 0, जितने वर्ड्स सब सब पे जीरो फेंक देगा ये। अब भाई यहां पर बनेगी स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स क्यों बनेगी? अरे जीरो देख रहे हो, स्पार्स मैट्रिक्स, sparsity, there will be sparsity here। ये काउंट वेक्टराइजर में होगा। टीएफ में टीएफ का फॉर्मूला अलग है, करता वो भी यही है। टीएफ ऑल्सो डू द सेम थिंग, लेकिन टीएफ इज टर्म फ्रीक्वेंसी इनटू इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि टर्म मीन्स वर्ड, देखो जरा, टर्म मीन्स वर्ड, frequency means how many times it is coming in a sentence। Okay, for example, I do have a sentence, I am your AI teacher, I am looking forward for I, so I is coming one time in this sentence, there are 1 2 3 4 5 words in the sentence, so 1 by 5, this is term frequency, multiply by इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो भाई इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में ये और बड़े वाले लॉग लगाते हैं, लॉग इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, इन माय एंटायर टेक्स्ट आई एम हैविंग 100 सेंटेंसेस, तो एन आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेंटेंसेस विच आर हैविंग दिस वर्ड आई। लेट अस सपोज इन 10 सेंटेंसेस आई एम हैविंग आई। तो ये फॉर्मूला होता है टीएफ का, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट में वैल्यू आती है, पॉइंट्स में। इससे स्पार्सिटी को कम करने की कोशिश करी गई है, स्पार्सिटी कम करने की कोशिश करी। either you can use TF-IDF, either you can use count vectorizer। I think preferred one is TF-IDF, that's what you can use। मशीन लर्निंग में ये होता है। अच्छा, अभी तो मैं आपको आरएन बता रहा था, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। अच्छा, क्योंकि मशीन लर्निंग इज नॉट ट्रीटिंग द डेटा इन अ सीक्वेंस, सो द रिसर्चर्स अगेन दे केम इनटू द पिक्चर, दे थॉट दैट ओके वी हैव टू कंसीडर द टेक्स्ट इनटू अ सीक्वेंस। तो दे फर्स्ट गेव द आर्किटेक्चर ऑफ आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इन आरएनएन वी आर हैविंग अ लेयर, we do create a sequence, we do create a sequence, like we are having a sequence cat mat rat। अब भाई ये कैट गया सबको, ओके, ये सबको गया। फिर मैट, ये भी गया सबको। देन फिर रैट, ये भी गया। एंड देन माय सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस भी पहले गया कैट, जैसे ही कैट गया आउटपुट जो आया, ओके, उसको लूप बैक कर दिया मैंने। सो फर्स्ट इज कैट, देन कैट मैट, देन कैट मैट रैट। यहां पर सीक्वेंस खत्म हो गया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सीक्वेंस? फॉर एग्जाम्पल 0, ठीक है, योर फर्स्ट सीक्वेंस इज ओवर। फिर अगला सीक्वेंस आएगा मैट मैट रैट, फिर भैया मैट गया, लूप बैक, रैट आया तो मैट रैट, फिर लूप बैक, मैट मैट रैट, ऐसा करके लूप बैक करेगा। फिर आंसर आया 1। तो ये सीक्वेंस कंप्लीट करते हैं, ये सिक्वेंशियल मॉडल है, ये लूप बैक करते हैं, रिकरिंग है, ये रिकरिंग है। लेकिन भाई इसमें बहुत लफड़ा हो गया था, ये कॉम्प्लेक्स है, आप देख रहे हो ना, लूप बैक कर रहा है वो।
It is complex in nature, and because of its complexity, अच्छा, ये लूप बैक कर रहा है, तो लूप बैक के चक्कर में वी डू हैव ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं अपन डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ये जो ग्रेडियंट है ये वैनिशिंग की तरफ जाता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट, वैनिश होता है, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा ये। क्यों? क्योंकि वो ग्रेडियंट पे ग्रेडियंट पे ग्रेडियंट मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। ओके, पूरी मैथ्स है इसकी, मैं पढ़ाता हूँ अपने जेन आई में, तो पूरी मैथ्स है इसकी, वो वैनिशिंग की तरफ जाएगा, ये प्रॉब्लम थी इसकी। एंड दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके, तो राइट नाउ लेट्स चेक द कोड फॉर सिंपल RNN, देख लेते हैं। So the code for simple RNN is this thing. Again, sequential model embedding layer, यहाँ पर लग गया simple RNN. There I took flatten, now here I am taking simple RNN. ड्रॉप आउट ले लिया 0.2 का, रिकरेंट ड्रॉप आउट ले लिया 0.2 का, 20% का ड्रॉप आउट कर दिया, बाकी सब सेम है। शॉर्टनेस एक्टिवेशन फंक्शन, स्पार्स कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी, ट्रेनिंग डाल दिया, एंड इट गॉट ट्रेंड, एंड देन आई हैव अ प्लॉट। ये प्लॉट अब ऐसा आया, ओके, सिम RNN ही है ना ये, हिस्ट्री RNN, हाँ ठीक है, हाँ, दिस इज द प्लॉट आई एम गेटिंग। अगेन ट्रेनिंग एक्यूरेसी इंप्रूव हो रहा है, वैलिडेशन वाज कांस्टेंट एंड देन समहाउ व्हाट इट इंक्रीज एंड देन ड्रॉप, लॉसेस आल्सो गेटिंग लेस, बट वैलिडेशन लॉस इज मोर देन द ट्रेनिंग। तो अभी स्ट्रगल तो कर रहा है मॉडल। ओके, हो सकता है ओवरफिटिंग हो रही है, मुझे यहाँ पर फ्यू मोर लेयर्स कैन बी एडेड, लाइक ड्रॉप आउट आई एडेड, बैच नॉर्मलाइजेशन हो सकता है मुझे ऐड करना पड़े। सो ये जो डीप लर्निंग के लेयर्स का है, व्हाट द लेयर डू, बैच नॉर्मलाइजेशन, ड्रॉप आउट, रेगुलराइजेशन, ये मशीन लर्निंग से लेकर ये डीप लर्निंग तक पीछा नहीं छोड़ती, जनरेटिव आई में भी नहीं, इट विल नॉट लीव, वो आएगी आएगी, आनी चाहिए तुम्हें। ओके, दैट्स व्हाट यू शुड हैव टू नो। खैर कोई बात नहीं, ये मॉडल ट्रेन करा, स्कोर्स लाइक दिस आई एम गेटिंग, ओके, एंड फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स का प्रिंट करा, तो भाई ये भी स्ट्रगल कर रहा है। दिस मॉडल इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू आइडेंटिफाई क्लास 1, लेबल 1। ओके, इसका तो और कम हो गया, 77% का एक्यूरेसी है, प्रीवियस वन वॉज 79, दिस वन इज 77, फर्दर रिड्यूस हो गया एक्यूरेसी। तो फिर क्या करें अपन, व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू? चलिए, ये स्ट्रगल कर रहा है, LSTM यूज करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। हाँ, हियर इट इज LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म। अब देखो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म, ये नाम ही खतरनाक है। पहली बात तो मैं जब व्हेन आई आल्सो इनिशियली स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स, टफ पड़ता है, इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए, बट एक्सप्लोर करा मैंने इसे बहुत। ओके, LSTM, लॉन्ग शॉर्ट, पहले तो आपको RNN का ड्रॉबैक शुड बी क्लियर, सो वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, देन वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, आई डोंट वांट दिस ग्रेडियंट टू गेट वैनिश, आई डोंट वांट दिस ग्रेडियंट टू बिकम जीरो। दो इश्यूज होते हैं ग्रेडियंट के साथ, आइदर इट इज वैनिशिंग और आइदर इट इज एक्सप्लोडिंग, दो इशू होते हैं। वैनिशिंग में टेंड्स टू जीरो, एक्सप्लोडिंग में हाई वैल्यूज, इन बोथ द केसेस वी आर नॉट गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट्स। सो उसको मैनेज करो आप। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी हमने बनाया, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, अब आपका RNN तो सिंपल था, यू आर जस्ट टेकिंग द न्यूरॉन्स हियर एंड यू आर जस्ट लूपिंग बैक लूपिंग बैक लूपिंग बैक लूपिंग बैक लूपिंग बैक, ये कर रहे थे, सीक्वेंस कंप्लीट कर रहे थे। LSTM में ऐसा नहीं है। ओके, LSTM, हाँ, इट्स कजिन्स, LSTM इज अ कजिन ऑफ RNN, वहीं से ही प्रेरित है ये, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम RNN ओनली, इट्स अ कजिन है ये। यहाँ पे अपन रिकरेंस तो करेंगे ही करेंगे, वी विल रिकर, बट नॉट इन दिस वे। देखो, LSTM का आर्किटेक्चर ये होता है हिडन स्टेट, ये होता है सेल स्टेट,
Here you are going to give the input. It will pass through sigmoid activation function. It will again get joined to this ct minus 1 cell state. यही इनपुट यहां से फिर फ्लो करा. Again I am having sigmoid activation function. I am going to get an output here, जो कि here again ये इन फ्लो कर रहा है. Here I am having 10h activation function, hyperbolic tangent. Whatever be the output I am getting, उसको इसके आउटपुट के साथ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं, मल्टीप्लाई, एंड देन इसको मैं यहां पर आई एम गोइंग टू ऐड, यहां पर मैं ऐड करूंगा. सो हियर आई विल मल्टीप्लाई एंड हियर आई विल ऐड. ठीक है. देन फिर ये वापस से चल रहा है. दिस इज सिग्मॉइड अगेन. ओके, ये यहां पर आएगा. दिस इज ct सेल स्टेट, और सेल स्टेट को हियर आई विल गिव 10h. सेल स्टेट को 10h में करूंगा मैं. ओके, और यहां से जो आउटपुट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा. सो वट एवर बी द फाइनल आउटपुट आई एम गेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज द हिडन स्टेट, ht माइनस 1. अब आप बोलोगे सर याद हो गया क्या आपको आर्किटेक्चर ये? क्यों भाई देवेश, सुन रहे हो? देवेश है ना? यस सर. ठीक है. तो एक समय था जब मैं स्ट्रगल करता था. देखो, सच बोलने में, छुपाने में कोई बात थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि सर डायरेक्टली कहीं, मतलब ऐसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है. हार्डवर्क है सारी चीज़ों के पीछे. आवर्स एंड आवर्स लगे हैं सारी चीज़ों को करने के पीछे. ठीक है. और इसका नाम मैंने देवेश का, क्योंकि काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, मेरे को देख रहा है, ये सुन रहा है काफ़ी, इसलिए इसका नाम लिया मैंने. ओके. तो ये अब आपका LSTM का आर्किटेक्चर बना, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का. इसमें इतना जो पोर्शन है, दिस मच पोर्शन, इट इज कॉल्ड एज फॉरगेट गेट. इतना जो पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एज इनपुट गेट. और इतना जो पोर्शन है, ये इतना वाला, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट गेट. सो LSTM में इन्होंने गेटिंग मैकेनिज्म दे इंट्रोड्यूस्ड. गेटिंग मैकेनिज्म यानी इनपुट, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट, 3 गेट्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड. forget gate for to just to forget what is important, what is not important, भूल जाओ उसको. input gate, you are going to give the next input, ठीक है, to the previous one, previous sequence में नया input जोड़ के आगे की कहानी बनाना है. and then this is the output gate. okay, here we are having cell state and hidden state. cell state is long term dependency, hidden state is short term dependency. अब बोलोगे सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होती है? देखो बता रहा हूं. आई एम योर AI टीचर, वी डू लर्न AI टेक्निक्स हियर. शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी होती है UMAI. मतलब ये जो वर्ड यू है, इसके आसपास के जो वर्ड्स हैं, हाउ इट इज रिलेटेड, व्हाट इज, मतलब इनके बीच का रिलेशनशिप जो है, डिपेंडेंसी जो है, ये देखी जाती है. दैट इज शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी होती है AI की लर्निंग के साथ. मतलब इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस का ये जो वर्ड है, इसके बीच की डिपेंडेंसी चेक करेंगे. दैट इज लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी. तो LSTM ये होशियार था. LSTM इज स्मार्ट. LSTM do consider short term dependency also and long term dependency also. उसको याद रखता था
कि क्या भूलना है, क्या याद रखना है, एंड ऑल दीज थिंग्स उसको ही होता है। हालांकि क्योंकि वो रिकरेंट है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, फिर भी वो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी जैसे ही आपका टेक्स्ट बढ़ेगा। व्हेन योर टेक्स्ट या व्हेन योर टोकन्स एंड ऑल दीज थिंग्स से बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि रिपीटिंग है वो। ये खत्म होने के बाद, ये तो एक कंपोनेंट बनाया है भाई मैंने, इसके आगे फिर ऐसे ही कंपोनेंट और बनेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट बनेंगे। फाइन। तो भाई ऐसा है कि ये आपका जो है एलएसटीएम है। अभी बहुत ही शॉर्ट में बताया, कहानी तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आई एम यूजिंग यहाँ एलएसटीएम नेटवर्क। ओके, एलएसटीएम 100 न्यूरॉन्स, वही ड्रॉप आउट पॉइंट टू रिकरेंट पॉइंट टू लगा दिया, ट्रेनिंग आई परफॉर्म, and now I think I got some changes. I got some changes here with LSTM, and now at least label one ka one of the instances captured. In the previous model we are not able to capture any of the instance, but here we got an instance. इसने label one पकड़ लिया, I got one entry. That means my model is able to understand लेबल वन का वैल्यू, इट इज एबल अंडरस्टैंड। फेल नहीं हुआ मेरा मॉडल इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इट एबल टू आइडेंटिफाई। ओके, देन ठीक है, दिस मॉडल इज गुड मॉडल। एक्यूरेसी 85%, हाइएस्ट सो फार। 79 वॉज प्रीवियस, दिस इज 85। देखा, सीक्वेंस में ऐसे यदि आर्किटेक्चर बनाओगे फायदा हो गया। 85% एक्यूरेसी। देन एलएसटीएम की काफ़ी बुराइयां भी हैं, मेरी ड्रॉबैक्स है एलएसटीएम के, कुछ अच्छाइयां हैं। वी कैन यूज इन बाई डायरेक्शन। एलएसटीएम नेटवर्क कैन बी यूज इन बाई डायरेक्शन। दैट मीन्स योर जो एलएसटीएम मैंने बनाया था ना, LSTM1, LSTM2, LSTM3, we are having LSTM1, LSTM2, LSTM3. ओके, यहां पर अपन, दिस इज फॉरवर्ड पास, दैट मीन्स यू कैन गिव द टेक्स्ट इन दिस वे, एंड दिस इज बैकवर्ड पास। दिस इज बैकवर्ड पास, दैट मीन्स जैसे ये ना, आई एम योर AI टीचर, तो जो फॉरवर्ड पास है वो आई एम योर AI टीचर ऐसे चलेगा वो, इट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। एंड जो बैकवर्ड पास है वो ऐसे चलेगा, टीचर AI UMI। तो फ्रॉम इन दिस LSTM आई विल गो टीचर AI UMI, एंड इन दिस LSTM आई विल गो आई एम योर AI टीचर। क्यों कर रहे हैं अपन, वाई लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? द रीजन इज कि भाई मच मोर बेटर कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज देर माइट बी वर्ड इन अ सीक्वेंस जो कि डिफरेंट मीनिंग के हों, सेम हो बट डिफरेंट मीनिंग्स के हों। So I want to have a better understanding of the words. I can have some good dependencies. I can capture those dependencies. I can capture those patterns in the data. That is the reason. Let's try from both the ends, left to right and right to left. ओके, तो भाई बाई LSTM यूज करा मैंने यहाँ, ये देखो बाई डायरेक्शनल LSTM ये यूज करा। Okay, I trained my model with the bi-LSTM, and fine, this is the plot for bi-LSTM. After a certain level, the loss increased, accuracy somewhat decreased for validation. This is the confusion matrix. The good thing is यहाँ पर उसने लेबल 2 पकड़ लिया,
कुछ गलतियां भी हो गई उससे, मिस्टेक भी हुआ है। हाँ, अनबैलेंस्ड डेटा, दैट इज व्हाट द इशू इज कमिंग, बिकॉज ऑफ दैट अनबैलेंसिंग इशू आ रहा है। यदि अनबैलेंस नहीं होता तो देयर विल नॉट बी एनी इशू। ठीक है, तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स हुए हैं, बट ठीक है, 81% का एक्यूरेसी इट इज गिविंग विद बाई डायरेक्शनल, all the classes captured. I can first do this thing is I can balance the data and then I can give it to the architecture. Definitely it will improve. Okay, then you will get some good scores. Right now you are getting, and one is the deep learning. इतने छोटे data पर तो use नहीं करते ना. For deep learning we should have a big huge amount of data. I am just running this deep learning algorithms over 800 900 rows. So how is this? But you can extend this code. My idea is just to explain. You can extend this code to your thousands of rows. वहां पर लगा दो यही की यही है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एटलीस्ट कोड तो हो आपके हाथ में, कोड होगा तो लगा देना। ओके, so this is how we performed the sentiment analysis of social media classification by using machine learning and deep learning techniques. डीप लर्निंग, RNN, LSTM बाई LSTM बता दिया मैंने। ओके फाइन। तो वैसे कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी फिलहाल प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव इतना ठीक है। Code I have already shared. One suggestion I want to give: kindly balance the data before using deep learning algorithms. बाकी सब सेम है, everything is same. The entire code is same. Just balance the data and give it to the algorithm and then see what is the result coming. Okay, fine, got it. All right, all right, all right. I think it's already late. Let me stop.